Hey, hi. Welcome to another session of Vedic Maths. So here we are going to do another topic known as base method of multiplication. Base method multiplication. Now, it is actually even better than the general multiplication. Yes, it will make your calculation super fast. Now we're gonna see how it's gonna happen. First of all, you're gonna understand what sutra is this. This is called Nikhilam Navata Karaman. It's my duty to tell you the sutras, okay? The names. And sub sutra we're gonna use Anurupena in this, okay? So that you have full-fledged knowledge of whatever we are doing in this course. Now, coming to the interesting part. So what we are going to do in this is, let's say I have for a timing, I'm just to make you understand. I know you know how what is 9 times 9, just to make you understand. Here, this guy is below base 10. The 10 is the base because it's near to that. Now, if I talk about कि ये 10 से कितना कम है, you will say, sir, 1, 1 कम है, right? Minus 1, because 9 minus 10 will be minus 1, in fact, right? I hope you know your integers. Now, the process is what you're gonna do. You're gonna just take one guy, this 1 into 1, minus 1 into minus 1 will become 1, you write 1. See, right now there is 1, 0. So you are supposed to, you can write one digit. If it was two zeros, let's say 100, some calculation which involves base 100. Now what's gonna happen? You are allowed to have two digits. So you're gonna write 0, 1. Okay, you're gonna have two digits. As many zeros are there, as many digits should be there. We'll talk about in the more examples. Don't worry. Now what are we gonna do? This 9 minus 1, or like this also you can do. So 9 minus 1 will be 8, right? Now you multiply this 8 with the rank. Rank is what? 1. Rank is the prefix, the first number of this base is called rank. So 8 times 1 is 8. I know it's not pretty much clear. Let's do another one. If I say 7 times 6, you know 42, right? But I'm doing it to make you understand. So we'll come to the bigger calculation. The base is 10. Now this is minus 3. This is minus 4, of course. 4 times 3 is 12, but you cannot write 12. You will write 2 because 1 0 is there. Only one digit is allowed. One will be taken as carry. Now, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. 7 minus 4 कर लें या फिर 6 minus 3 करें. दोनों में 3 आएगा. So 3 और फिर इसको आप रैंक से मल्टीप्लाई करें. रैंक कितनी है? 1. So 3 times 1 is 3 plus 1 that is 4. So 42 is the answer. अब बातें इंटरेस्टिंग होने लगेंगी. कैसे? अब बिलो बेस हम बात करते हैं. बिलो बेस 20. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. 19 टाइम्स देखना कितना इजी हो जाए. ये 20 से माइनस 1 है. ये माइनस 2 है. 1 टाइम्स माइनस 1 टाइम्स माइनस 2 इज 2. नाउ आप कोई सा भी कर सकते हैं. 19 माइनस 2 से भी 17 और 18 माइनस 1 से भी 17, तो 17 आएगा. फिर आप क्या करें? रैंक से मल्टीप्लाई करते हैं. 17 का डबल क्या होता है? 34. हो गया विद इन मिली सेकंड्स. देखिए जनरल मेथड से भी कितना फास्ट है वो टेक्निक. दैट्स व्हाई आई लव दिस वैदिक मैथ्स कोर्स एंड आई होप यू आर लविंग इट टू. सो 342. एक और करते हैं एग्जांपल ताकि आपको क्लियर हो कि हाँ ये हर बार लगता है. जैसे आई गिव यू 17 टाइम्स 16. अभी हम अब बेस भी जाएंगे. नो नीड टू वरी. So 20 say minus 3, this is minus 4. Minus 4 times minus 3 is 12. So you're going to write 12, but 1 as carry. 17 minus 4, you know that is 13. Or 13 ka double pyare bache or pyare educators is 26 plus 1 is 27. And that is our answer. I hope it is clear. Let's take below base. You can take any below base. Below base 30, below base 40, below base 50. कोई सा भी नंबर अगर ऐसा आता है जैसे 39 टाइम्स 38 आ गया तो आप क्या बेस लेंगे? यस यू आर करेक्ट. बिलो बेस 40 करके करेंगे. तो आई होप यू आर गेटिंग द टेक्निक. मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ अगर आपको क्लियर हो गया ये चीज. चलिए अब ऐसा करते हैं. बिलो बेस 100 पे जाते हैं. कभी कभार बड़े नंबर भी तो आते हैं. ये आपको जनरल मेथड से ही फास्ट रिजल्ट देगा. 99 को 98 से करना. कितना कम है 100 से? वन. कितना कम है 100 से? माइनस 2. माइनस वन टाइम्स माइनस 2 इज 2 in fact. But here there are two zeros, so be very careful. You have to manage two digits somehow, and 2 can be written as 02. So you can write 02 here. You should write 02. Now 99 times minus 2 is 97. आप ऐसे भी कर सकते थे. और रैंक तो 1 ही है. तो 1 सॉर्ट लगेंगे वही आएगा. देखिए विद इन मिली सेकंड्स वी गॉट द आंसर. Isn't it interesting? Yes, it is. I can hear you. Okay. So now let me give you more. What about 90 times 88? आप below base 100 लेके कर सकते हैं. 90 भी ले सकते हैं. लेकिन उससे डिफिकल्ट हो जाएगा तो 100 लिख कर. तो अगर आप 100 लेके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल माइनस 10, दिस माइनस 12.
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है, 1 विल बी कैरी। नाउ ये माइनस किया, दिस विल बी 78, और 78 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 78 ही आएगा, प्लस 1 इज 79, सो 7920 इज गोइंग टू बी आवर आंसर। नाउ व्हाट इफ बिलो बेस में और हायर लेके जा सकता हूँ। बिलो बेस जैसे मैंने आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया है 298 एंड 295, बिलो बेस क्या चलेगा, बिल्कुल सही 300। तो आप क्या करेंगे, -2 here -5, now just multiply, -2 times -5 is 10, but 2 zeros so 10 you are allowed। now इसको माइनस करें कितना आएगा 293, और उसको फिर 3 गुना कर दे, 3 गुना तो आता ही होगा भाई, 3 गुना कर दिया तो 879, so 879 and we got the answer। बल्ले बल्ले, इजी है। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट, इट्स वेरी वेरी इजी। नाउ तो आपको पता चला आप बिलो बेस ऐसे 900 तक भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट बिलो बेस इज ऑल अबाउट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम गोइंग नाउ अबव बेस, क्या ऐसा भी तो हो सकता है 11 टाइम्स 12, मुझे पता है 132 है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा तुरंत। अबव बेस 10 है ये, 10 से ये +1 है, ये +2 है, इस बार 11 में से माइनस करेंगे 10 तो प्लस में आएगा ना। सो नाउ 2 टाइम्स 1 इज 2, 11 प्लस 2 इज 13, और 12 प्लस 1 भी 13 होता है। तो 13 को रैंक से मल्टीप्लाई करिए, 1 आएगा तो 132 विद इन सेकंड्स आ गया। बोलिए बात बनती है। 14 इंटू 14 करिए, 10 से कितना ज्यादा है +4, ये भी +4, 4 टाइम्स 4 इज 16, बट एक जीरो है तो एक ही डिजिट अलाउड होगा, तो 1 यहाँ पे। 14 प्लस 4 इज 18, 18 प्लस 1 इज 19, सो 196 इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये हमने समझा कि अब बेस में भी लॉजिक चलता है। अगर आप 21 टाइम्स 23 कोई कैलकुलेशन आ जाए तो ये अब बेस 20 की बात हो गई, राइट। आई नो आपके माइंड में ये भी आ रहा है, क्या पता अलग अलग नंबर हो, एक बेस अलग हो एक बेस अलग हो, 21 इंटू 31 हो जाए, तब कैसे करना वो भी हम बात करेंगे धीरे धीरे, वी आर मूविंग ओके। सो दिस +1, दिस +3, सो 1 टाइम्स 3 इज 3, 21 प्लस 3 इज 24, और क्योंकि 2 है रैंक तो 2 से मल्टीप्लाई किया 48 वी गॉट, एंड दैट इज वाला आवर आंसर। अब बेस 100 भी कर लेते हैं भाई, अब बेस 100 भी कर लेते हैं, 101 103 कर लेते हैं, तो अब बेस 100। याद रहे 2 zeros मतलब 2 डिजिट अलाउड है, +1 +3, 1 टाइम्स 3 is 3, but we gonna write 03 because 2 digits we have to write। now 101 plus 3 is 104, इसको पहले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 104 ही आ जाएगा और हमारा ये आंसर विद इन मिली सेकेंड्स आ गया। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस समझने में और आपको क्लियर हो रही होंगी बातें। 205 को 206 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब बेस क्या 200, so +5 +6, 5 6 are 30, yes you can write 30 because 2 zeros are there, zeros decide how many digits you can write here। so +6 करते हैं 211, और 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, रैंक से मल्टीप्लाई करना, तो डबल कर देते हैं, तो ये आंसर हो गया भाई। मजाक बना रखा है कैलकुलेशन को, राइट, यही करना है, मजाक मजाक में पढ़ा देना है बच्चों को, मजाक मजाक में पैसा बनाने का है, राइट। you do this in front of a student, they will literally treat you like god sometimes, I have felt it, right? And when they get to know the trick, they understand the server was making a stupid out of them, right? So it is actually very very interesting. They will look at you and they will be amazed. Okay, this is something different. This is what is going to make me different from others, and they're gonna take interest in your mathematics, your physics, whatever you are teaching. Maybe you're teaching Hindi or English, but yeah, just for the timing to freshen their mind, you can teach these tricks because they are used, right? Because calculations are used everywhere in every competitions also. Let's say I have 999 times 998, ठीक है। अभी मैं अबव बेस बिलो बेस नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि करना है वैसे 1000 का बिलो बेस 1000 का, दो कितनी जल्दी होगा, ये होगा -2, ये होगा -2, -1 टाइम्स 2 इज 2, क्या बता सकते हैं क्या हम 2 लिखेंगे या फिर कुछ और लिखेंगे, 3 जीरोस हैं तो 0 0 डालना पड़ेगा, 3 डिजिट बनाने पड़ेंगे, माइनस क्या 997, 1/997, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी, काफी टाइम लगता है इसमें, लेकिन आपने बहुत जल्दी किया। ऐसे अगर मैं आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन दे दूं, आपको जरूरत ही नहीं है वो सब करने की जो आप जनरल मेथड कर रहे थे, मतलब कि फास्टेस्ट और तरीके हैं वैदिक मैथ्स में, राइट। सो ये 1000 से कितना ज्यादा है 5, ये कितना ज्यादा है 102, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 आएगा, 3 डिजिट अलाउड है तो लिख सकते हैं, प्लस के एन को इन दोनों को प्लस किए, इट्स नॉट डिफिकल्ट, 10 दिस मल्टीप्लाई बाय 1, सो दिस इज 1107, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के फास्ट है। I hope you understood what we just went through. I just taught you below base,
राइट। बिलो बेस में आप 10 भी जा सकते हैं, 20 से 90 भी जा सकते हैं, राइट, 100, 120, 900 तक भी, 1000, आपकी लिमिट ही नहीं है। अबव बेस में भी ऐसे ही है, सेम लॉजिक वी कैन अप्लाई, राइट, सेम लॉजिक वी कैन अप्लाई। जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स आर, जीरोस डिसाइड कितने इधर के वाले नंबर पे आएंगे डिजिट्स, और आपको रैंक से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, क्रॉस वाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर यू डू। So this was above and below base. We are going to do base method multiplication 2 sessions, because there is one more session I'm going to take where it may be something like that, that एक above base है एक below base है, ऐसा भी तो कई सारे exceptions भी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।